Okay, before starting the combustion in this chemical properties of carbon compounds, I just want to give the best wishes to the winning party because today is a counting day. So my best wishes and deep regards. But you have to work for education and bring back the bold in old patterns. So thank you very much to you all. Now, chemical properties of carbon compounds. The most common carbon compounds are hydrocarbons and are these alkanes, alkenes and alkynes. Substitution reactions and addition reactions I have already done in my 2 episodes, but still from last 2 days I have made this combustion, and again today I am again making by some fault, by my mistakes. It was just erased from my mobile, so no problem at all. Again I am just teaching you and just explaining all these. So combustion reactions occurs in all types of in all types of hydrocarbons. Hydrocarbons means, now it is for alkanes, this is for alkene, and this is for alkynes. Alkynes. The general molecular formula is CnH2n plus 2. Its general molecular formula is CnH2n, and its general formula is CnH2n minus 2. On the basis of this general molecular formula, you can just make the molecular formula and the structural formula. So it is one of the essential part, the main part to make the molecular formula. And this alkane is saturated hydrocarbons, and these both are your unsaturated hydrocarbons. It is with single bond. The carbon is surrounded by single bond with hydrogen, and at least 2 carbon must be with this alkane, and in this alkyne 3 bonds with 2 carbons must be there. ये पहले the full detail I had given already in my last videos. So means combustion reactions occurs in all types of hydrocarbons. Either those are the saturated hydrocarbons or the unsaturated hydrocarbons. Is it clear? Fine. So now the first one reaction is known as your burning. वैसे the students they also know the combustion. Burning, either you can say that or the combustion. जलना आपका हो गया, आपका ना देखो. इसका मतलब the method या the process, आप जो भी लिखे आपका देखो ना, of burning of carbon compounds in air to produce या to give, जो भी आप कहें, that's depend upon you. Produce carbon dioxide gas with water, means H2O, and heat and light is called, is known as burning, yeah, combustion, you can say that. Is that clear? So means combustion is also known as your burnings. It means most of, yeah, mostly, you can write आपका नाम, the carbon compounds, CCS का मतलब carbon compounds burn in air या with air, आप जो भी कहें आपका नाम देखो, to produce या to give a lot of heat.
अत्यधिक मात्रा में आप जिसको कह सकते हैं, इन एक्सेस अमाउंट आपका हो गया। तो ना अब एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं तो ना देखो एग्जांपल एल्केन्स, when alkane which is saturated hydrocarbon, is it clear आपका नाम, बर्न इन एयर, हवा में जलते हैं, टू प्रोड्यूस a lot of heat to which, ठीक है, therefore it is also an excellent fuel, outstanding you can say that आपका नाम। आगे जाके और डिटेल में आप इसके गर्भ में जाएंगे आपका नाम, इसके कोर में आप जाएंगे आपका नाम। इज इट क्लियर? तो ना एग्जांपल की बात कर रहे हैं, व्हेन एल्केन, नाउ n is equal to आपका नाम, it belongs to the natural number because you are also the student of the mathematics। तो now natural numbers that start आपका नाम, which starts from 1 and so on। so now n is equal to 1 for first member, if you are taking the first member, so now this you have to keep the value here, n is equal to 1 now into 2 into 1 plus 2, so now the first member is CH4। if either in alkane, alkyne, if the number of carbon atoms are 1, so now that is math, and the suffix an is an is now just added there to math. This math plus an is known as, this is the methane, because the atomic number of carbon is 6. So when you will do the electronic configuration means Bohr sir has given the formula for the electronic configuration 2n square, and Moseley sir has also given the atomic number. So this long periodic table was made under the guidance of the Mendeleev sir in 1913। so now methane, तो देखो ये, this is the general molecular formula, this is the molecular formula, and the CH4 is also written as a H3C single bond H. Hydrogen, it is kept over alkali metals, which is known as the first A group now। so now this is that, so it means to when CH4 is methane, which is the alkane saturated hydrocarbon, is also known as a natural gas. This is the natural gas, burns with sufficient air, sufficient supply, you can also write, doesn't matter, supply of air, then carbon dioxide gas, water vapor, is it clear, are produced, या फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, with a lot of heat and light, is also exposed or are also produced। so now the reaction, this is the methane, the first member of alkane series, which is coming from CnH2n plus 2, when the sufficient supply of oxygen, it is from air से आप इसको करेंगे। now it is burning, means the combustion process is taking part here। so now carbon dioxide gas, now the two molecule of water with heat and light, it also produces combustion reaction। the number of carbon atom, the number of hydrogen atom, the number of oxygen atom, means the number of atoms present in the reactant is equal to the number of atoms present in the what, this is the produced आपका हो गया, प्रोडक्शन आपकी हो गई। इज इट क्लियर?
So now, if the atoms are equal, so now they are known as the balance reactions. So now, what is methane? Methane is known as your natural gas. Is it clear? So now this is it produces is it clear? Now a lot of heat, it is producing आपका ना देखो on burning, ये combustion हो रहा है, so it is used, which one? Natural gas कहिए या आपका मीथेन कहिएगा, as a fuel. यहाँ पे एल्केन की बात हो रही है आपका, क्योंकि हीट, लॉट ऑफ हीट इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, तो दैट्स व्हाई एल्केन या नेचुरल गैस, सो इट इज यूज्ड as a fuel in domestic purposes. I mean to say that in homes जिनको आप कहते हैं, and in industrial या industries. अब इंडस्ट्रीज की याद आपने दिला दी. अब तो सो मेनी कंपनीज आर कमिंग, इन्वर्टर जो बनाते हैं, बैटरीज के अंदर आपकी प्लेट्स लगती हैं, ऑड नंबर्स में, इवन नंबर्स में आपका नाम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगती हैं. तो ल्यूमिनस जिसको आप कह रहे हैं आपका नाम, इससे पहले ये सबसे पहले बैटरी आपका लोनी बॉर्डर में बन रही थी. तो आई वॉज देयर एज ए फैक्ट्री मैनेजर एंड 25 इंजीनियर्स they were working under me in that company. तो वहां पे क्या होता था, ये लॉट ऑफ हीट के बारे में बता रहा हूं. कई सिलेंडर्स को जोड़ करके ब्लास्ट फर्नेस को गर्म किया जाता था, टेम्परेचर किया जाता था, और उसके बाद लेड की सिलीज, जो बड़ी बड़ी ब्रिक्स होती हैं या बड़े बड़े लॉक्स होती हैं, उनको डाला जाता था, मेल्ट किया जाता था, और तब आपका बैटरीज के प्लेट्स बनती थी वहां पे. तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेचुरल गैस को जब आप सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका वाटर वेपर और प्लस लॉट ऑफ हीट आपके निकलेगी. इसीलिए सो दिस नेचुरल गैस या एल्केन आर यूज एज ए फ्यूल इन होम्स, डोमेस्टिक पर्पसेस एंड द इंडस्ट्रीज. इज इट क्लियर? फाइन. तो नाउ अब इसी में आई एम जस्ट गोइंग अहेड, वेट फॉर अ लिटिल मोमेंट. तो नाउ the cooking gas which you are looking in at home, is it clear? That's known as a LPG, liquefied petroleum gas, which we use in our homes. अपने घरों में जो हम कर रहे हैं, अब तो पाइपलाइन भी आ गई आपके हल्द्वानी में, आ रही है मतलब, तो ना हो तो our homes, ये जो आप यूज कर रहे हैं आपका देखो नाउ, is an alkane, and it is the fourth member is called butane, C4H10. ये देखिए आपका नाम, इज इट क्लियर? C4H10 ब्यूटेन है आपका नाम. देखो दिस इज द, अब आपने क्या किया, ये गैस सिलेंडर्स में आपने यहां रेगुलेटर यूज किया. दिस इज द गैस सिलेंडर है. गैस सिलेंडर में आपका दिस इज द ब्यूटेन है. दिस इज नोन एज आपका डिलीवरी पाइप, जो आपके गैस स्टोव्स के साथ लगा होता है. दीज आर द बर्नर्स. बर्नर्स में स्मॉल आपका होल्स होते हैं, पोर्सेस जिनको आपका कहते हैं, पोर्सेस,
इज इट क्लियर? तो जैसे ही आपने क्या किया, इस रेगुलेटर को आपने यू हैव ऑन, देन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ऊपर को आपका नाम लिक्विफाइड, आपका देखो ऊपर को आएगी गैस में, और आपका बर्नर्स में छोटे छोटे पोस्ट से जब आप इसको बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइटर या स्प्लिंटर, आप जो भी कहिए, या मैच बॉक्स की जो तिल्ली होती है उससे आपका नाम देखो, तो ये आपका जो बर्नर से इट फॉर्म, ये यहां से आपका इट फॉर्म, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाएगा, लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए आपकी, तभी आपका देखो, और प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आपका लॉट ऑफ हीट एंड लाइट भी आप देगा आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो when butane LPG burns in air in the burner of your gas stove, then it forms carbon dioxide, water vapor, and lot of heat and light. It will be also released. So with the abolition of a lot of heat and some light, when you will keep the pan or the utensils over the gas stove, burners के ऊपर से आप रखेंगे तो आपका गर्म होता है, आप खाना you prepare the food there. So now due to this by supplying heat and light, आपका ना देखो, this butane is called the excellent fuel. Keep in mind that this is the excellent fuel. So means what is the now the special note which I am giving to you, ये आपका नाम देखो, this is कि कार्बन and its compound, कार्बन और उसके जो कंपाउंड है आर यूज्ड एज अ फ्यूल, इनको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज दे बर्न, मीन्स एल्केन की बात कर रहे हैं आप, एल्काइन की बात कर सकते हो सकता है वो तो आप आगे जा करके आपका देखो ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका अनसैचुरेटेड, बिकॉज दे बर्न इन एयर बाय releasing a lot of heat energy, तभी आपका खाना बन रहा है। आपका ना देखो, आपका अभी हम ब्यूटेन की ही बात कर रहे हैं, आपका ना देखो, दिस इज इट क्लियर? सो इट मीन्स दैट the saturated hydrocarbons, especially they are alkanes and their general molecular formula is CnH2n plus 2. Generally, when burn in air या with air, जो भी आप लिखें, with a blue and non-sooty flame, blue, अगर एक्सलेंट और सफिशिएंट सप्लाई अगर आपका इफ यू विल गिव टू द ब्यूटेन, मींस एल्केन की बात कर रहे हैं, तो फॉर प्रिपेयरिंग योर फूड यू वांट अ लॉट ऑफ हीट विथ सम लाइट, आप तो यू कैन सी दैट whenever your mom and you are just preparing tea, food, whatever is आपका on the gas stove, so the color is completely blue. It means you are giving, just taking from the air sufficient oxygen, non-sooty flame, which is not doing the blackened to your utensils, जो आपके काला नहीं कर रहे हैं आपके उसमें, वो आपका नॉन सूटी फ्लेम हो गया। नॉन सूटी फ्लेम याद रखिएगा, नॉट प्रोवाइडिंग ब्लैक स्मोक, दैट इज कॉल्ड द नॉन सूटी फ्लेम्स, याद रखिएगा। क्यों होता है भाई क्वेश्चन, ये आपका राइज करता है, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है ना, दिस इज कंपैरेटिवली लो होती है, कंपैरेटिवली लो, which
which gets completely oxidized, जो कंप्लीट पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका नाम देखो, दिस इज बाय द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से आपका नाम देखो, कंपेरेटिवली 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. When you are going to compare two objects and one is better, one is not better, so the comparative degrees you can use there. Is it clear? So now it means K. However, the supply of air sufficient, जिसको आप कहते हैं आपका देखो sufficient for burning, for combustion भी you can write आपका नाम देखो, combustion now is if lowered. यहाँ पे lowered का मतलब I just want to say you that आपका reduce, अगर कम कर दी जाए उसकी मात्रा को, sufficient नहीं दिया जाए, then incomplete combustion will take even with saturated hydrocarbons. Combustion will take place, लिख दीजिएगा, even with saturated hydrocarbons will burn, ये जलेंगे with a yellow flame, not blue, yellow flame, पीलापन आ जाएगा, where yellow flame with सूती या येलो, आप इसको नहीं भी लिखते हैं, विथ सूटी फ्लेम यू कैन राइट. इसका मतलब ही आपका हो गया कि येलोनेस होगी जलने में, एंड आपका ब्लैक एंड करेगा, ब्लैक एंड आपके बर्तन काले हो जाएंगे. योर स्टेंसिल फ्रॉम द बॉटम विच यू हैव केप्ट ओवर द स्टोव, येलोनेस आ जाएगी बिकॉज सफिशिएंट आपका सप्लाई नहीं मिलेगी. इज इट क्लियर? सो नाउ इट विल गिव यू द सूटी फ्लेम. lot of black smoke, lot of black smoke. अब ये बेसिकली इट इज नॉट डिपेंड अपॉन आपका सारे फैक्टर्स काम करते हैं. देखो आपका नाम समथिंग इज मोर देन, समथिंग इज लेस देन. अब आपका सपोज के लिए दिस इज द बर्नर, 3 बर्नर वाले भी आपके आ रहे, 2 बर्नर वाले भी आपके आ रहे. देखो यू कैन सी these. I'm just showing that for sufficient air supply.